हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू Campuswala, वन स्टॉप फॉर ऑल कॉलेज क्वेरीज। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं B.Tech फ्रॉम पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पेज आपके लेकर आया हूं। But before starting, I request you all to please subscribe to our channel and don't forget to press the notification icon so you won't miss any updates from the videos. So we get started. Established in 1983, Pune Institute of Computer Technology Society for Computer Technology and Research is a leading institute in higher education located in Pune. Students can pursue the education from the institute in degree courses including UG, PG and doctorate programs. These programs are offered in full-time mode. The courses provided are in the streams of engineering and approved by the AICTE. बात करें थे इनके B.Tech प्रोग्राम के बारे में. So B.Tech is a 4-year course offered in 3 specializations. Candidate can also get a lateral entry for the B.Tech program. Admissions to the B.Tech course is based on CET score followed by gap counselling. Candidates who are qualified for jeemain can apply for the B.Tech program. The institute releases cutoff and students with the minimum cutoff scores or above are eligible for admission. Out of the total seat intakes, 80% of seats are filled through gap and 20% are for institutional quota. बात करें इनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में. For open MS, CIWGC MS and institutional quota it is 98,995. For open OMS, CIWGC OMS and NRI it is 99,495. For OBC, EWS and ABC it is 59,865. For NTB, NTC, NTD and DTVJ, SBC, TFWS it is 20,734. For SC/ST it is 8,995. For OCI, PIO and FN it is 1,71,234. ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर बता दिया अकॉर्डिंग टू दी एकेडमिक, ये फीस स्ट्रक्चर है. बात करें इनके प्लेसमेंट्स के बारे में. सो इनका एवरेज क्या है 12.33 LPA, मीडियम पैकेज इज 12 LPA. टॉप रिक्रूटर्स आर मॉर्गन स्टैनली, अवाया, EQ टेक्नोलॉजी, ETM, Symantec, Rakuten, Ubisoft, HSBC, Adobe, Microsoft and Cadence. ये इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं. So, दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल अभी आपके पास आ रहा हो कि हमने जो एग्जाम दिया था उनके स्कोर्स के अकॉर्डिंग हमें हमारे टॉप कॉलेजेस का एडमिशन नहीं मिल पाया. क्या हमारे उन स्कोर्स के बेसिस पे इंडिया के टॉप कॉलेजेस अवेलेबल हैं? हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाएंगे? वहाँ के एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या वहाँ स्पेशल सीट्स या मैनेजमेंट सीट्स अवेलेबल है या नहीं है? इन सारे सवालों के लिए ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर व्हिच इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन. दिए हुए प्लान नंबर पर हमें कॉल करें. हमारे काउंसलर्स आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू गाइड करते रहेंगे. दे विल लेट यू नो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस, द कॉलेजेस व्हिच आर अवेलेबल टू यू, द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल टू यू अकॉर्डिंग टू द स्कोर्स व्हिच यू हैव गेट. और उसके बाद जो भी एडमिशन प्रोसेस रहेगा, जो भी स्पेशल सीट्स मैनेजमेंट सीट्स से रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी, दे विल कन्वे टू यू. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर शोइंग ऑन योर स्क्रीन. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. सी यू इन अनदर वीडियो.